Interior firm owners. This is Sumit from Interior Growth Partner, and today I'm going to discuss a concept called social proof and why you actually need social proof into your business, how you can bring in more social proof for your business, and how you can utilize social proof in your business. So please stay till the end of the video. I'm going to walk you through the step-by-step process that how you can do all the things that I have mentioned just now, and I'm going to get you more examples that how big companies are using it and how you can use that for yourself and for your interior business. So please stay till the end of the video and let me show you how everything works. So right now, I'm going to just present my screen real quick and walk you through the step-by-step process and give you more detailed version of how social proof actually works in interior business. So stay till the end. So the concept of social proof. The first thing is what is social proof, that what we're going to discuss. The second point is how you can build social proof, right? We're going to discuss that too, and how you can utilize social proof. इन सारी तीन चीजों को मिलाकर एक ऐसा सोशल प्रूफ का कॉन्सेप्ट हम बनाने वाले हैं जहां पे आप उसको यूज करके अपने इंटीरियर बिजनेस को और अच्छे और नए डील्स लाकर दे सकते हो, right? So let me walk you through the step by step process, but first, what is social proof? So right now in front of me, we have a great influencer, a great psychologist from US, which is his name is Robert. And what he says about the social proof thing is that when people are uncertain, they don't look inside themselves, they look outside for answers. And the thing why I'm saying this is कि लोग बहुत टाइम उनको पता नहीं होता है how I can make the decision. They always look for other people to rely on, right? उनको ये नहीं पता होता है कि दैट हाउ आई कैन मेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन. उनको हमेशा दूसरे लोगों पर रिलाई करना पड़ता है तो मेक अ डिसीजन. इसलिए बहुत लोग ट्राई करते हैं कि अगर मुझे कोई चीज रेफर कर दी जाए, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल रादर देन आई गो एंड सर्च फॉर इट, राइट? सो दिस इज व्हाई आई व्हाट इज सोशल प्रूफ, दैट लोगों को बहुत अनसर्टेनिटी होती है, दैट आई कैन नॉट मेक द डिसीजन. उनको खुद पे बिलीव नहीं होता है, इसलिए वो दूसरे पे रिलाई करते हैं टू गेट द आई वुड से द आंसर्स फ्रॉम अदर पीपल, राइट, जिन्होंने कोई सर्विस या प्रोडक्ट यूज किया हो. So we have four example in front of me that I'm gonna go in detail, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा that what social proof is and how you can build social proof, what is the use of social proof. So first example is कि here you can see in this particular box that if you are watching a comedy video, if you are watching a comedy show, you must have heard the electronic laughing sound, right? बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग नहीं हंस रहे बट यू गेट अ इलेक्ट्रॉनिक लाफिंग साउंड. ये सोशल प्रूफ को इस तरीके से यूज किया जाता है कि इफ दैट साउंड्स कम इन, योर माइंड हिट्स कि अदर पीपल आर लाफिंग टू. ओके, आपको ऐसा लगता है कि बाकी जो शो देख रहे हैं लोग, जो लाइव शो देख रहे हैं वो भी हंस रहे हैं, एंड इन द सेम केस आपको भी हंसी आती है. ओके, सो दैट्स द रीजन कि वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड को यूज किया जाता है ताकि आपके माइंड पे वो हिट करे कि ओके दिस गाय इज लाफिंग, दैट मीन्स आई नीड टू लाफ टू, राइट? सारी ऑडियंस हंस रही है तो मुझे भी हंसना होगा इस पर्टिकुलर लाइन पे. ऑलराइट, सो ये आपने बहुत कॉमन देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में. द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी हैव हियर इज द मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर्स, राइट? आप यहां नीचे देख सकते हो ओवर 19 बिलियन सर्व्ड. द रीजन दे आर सेइंग दिस पर्टिकुलर स्मॉल लाइन कि लोगों को बिलीव होगा कि अगर 19 बिलियन लोगों ने इस हैमबर्गर को खाया है, अगर उन्होंने इसको परचेज किया है, देन आई नीड टू परचेज इट टू, जस्ट बिकॉज ये बहुत डिलीशियस होगा, ये खाने में अच्छा होगा, और मुझे मेरे एंड से कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 19 बिलियन लोगों ने डिसीजन ले लिया है और उन्होंने इस चीज को यूज करके अपना ओपिनियन दे दिया है, राइट? दैट्स द रीजन कि मैकडोनल्ड इस चीज को एक बहुत छोटे तरीके से लेकिन बहुत बड़े मार्केटिंग वे में एज अ सोशल प्रूफ यूज किया है, राइट? सो दिस इज अ सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास है, विच इज लाइक हैविंग द कस्टमर रिव्यू. ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, आप अपने डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हो. ओके, इफ यू गो ऑन फ्लिपकार्ट एंड amazon, आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले यू ऑलवेज चेक द क्वालिटी ऑफ द रिव्यूज दैट द प्रोडक्ट हैज,
राइट। एंड द रीजन फॉर दैट कि बहुत लोगों को ये फील होता है कि अगर मैं रिव्यूज देखूंगा, अगर ये प्रोडक्ट को 20 या 30 या 1000 लोगों ने खरीदा है, राइट, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट हैज सम वैल्यू। ओके। सो इसलिए लोग पहले रिव्यूज चेक करते हैं, फिर फोटोज चेक करते हैं, फोटो रिव्यूज, वीडियो रिव्यूज, मल्टीपल रिव्यूज चेक होने के बाद एक प्रोडक्ट पे किसी बंदे का डिसीजन रेडी होता है। राइट। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि आज वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और लोग बिलीव करना लग गए। बट वट इट यूजली हैपेंस इज कि पहले प्रोडक्ट लॉन्च होता है, फिर फ्यू पीपल बाइज दैट, दे पुट रिव्यूज जस्ट बिकॉज एवरी कंपनी, एवरी प्रोडक्ट दैट हैज टू डू विद द मार्केट प्लेस, वो पहले प्रोडक्ट पे रिव्यूज के लिए अप्रोच करती है। इफ यू गो फॉर जोमैटो, जोमैटो इज ऑलवेज ओपन फॉर रिव्यूज। द रीजन फॉर दैट कि उनको लगता है कि अगर हमें रिव्यूज मिलते रहेंगे, देन आई कैन improve my sales, I can improve my product, I can work on my service, राइट। सो रिव्यूज उनको टॉप पे लाके देती है। इफ यू सी देयर इज अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन बिटवीन जोमैटो एंड स्विगी, बट लोग प्रेफर जोमैटो करते हैं। द रीजन कि उनका मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है, उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, उनका कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है, एंड दे ऑलवेज गो फॉर रिव्यूज। राइट। आपको सामने से आना होगा फॉर रिव्यूज, ताकि आपके प्रोडक्ट पे वो एक अथॉरिटी बिल्ड हो, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो। राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल इज द IMDb रेटिंग। अगर आप किसी भी मूवीज को देख लो, किसी भी थिएटर के मूवीज को देख लो, पीपल ऑलवेज गो फॉर नंबर 1 IMDb रेटिंग। द रीजन फॉर दैट, पीपल बिलीव दैट if someone has watched that and they give the number 1 rating, the 5 star rating or the 10 star rating, that means that movie performed really well। और उनको मेहनत नहीं करनी होगी कोई नई मूवी ढूंढने में जो माइट भी अच्छी लग सकती है या नहीं लग सकती है। सो दैट्स द रीजन दे ऑलवेज गो फॉर IMDb रेटिंग, ताकि उनको रेटिंग देख के समझ में आ जाए दिस मूवी इज परफॉर्मिंग रियली वेल एंड आई नीड टू वॉच टू। राइट। वॉट आई सेव्ड इज माई टाइम एंड डिपेंडेंसी ऑन माई सेल्फ। मुझे मुझे खुद पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा कि आई नीड टू फिगर आउट समथिंग, आई डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि लोगों ने अगर देखा है, दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट मूवी टू वॉच और परफेक्ट फूड टू ईट एंड परफेक्ट शो टू सी एंड परफेक्ट प्रोडक्ट टू बाई। राइट। आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू make my decisions। Okay, so let's move to the another point. Just like this is why the TripAdvisor, the Yelp, and other companies, the other successful companies have used social proof in order to get more sales for their company. So here is a quick note. People like to rely on the experience and opinion of other like-minded people to guide their own decisions and actions। राइट। अगर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मुझे शूज लेनी है, राइट, इफ आई गो ऑन फ्लिपकार्ट, देन आई नीड टू सी हाउ द क्वालिटी ऑफ द शूज। राइट। आई नो द शूज इज रियली गुड, वो दिखने में बहुत अच्छा है, बट स्टिल आई गो फॉर रिव्यूज। पर्सनली आई गो फॉर रिव्यूज टू सी व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द शूज। राइट। लोगों ने क्या बोला है, मेजोरिटी सी, इफ 10 अगर रिव्यूज है वहां पे, देन अगर 6 रिव्यूज आर लाइक कि दिस इज अ रियली गुड शूज एंड 4 रिव्यूज आर लाइक कि ये बहुत अच्छे नहीं है, दिस हैज सम प्रॉब्लम, then I still go for buy it just because the majority of the people have the good experience, right? So मुझे ये समझ में आता है कि if you have the social proof, right, then other people will start relying on seeing the other people having a good product or service with your company। ओके। सो दिस इज लाइक कि लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं दूसरों के ओपिनियन पे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। ऑलराइट, let's move to the next point. And this is an experiment, this is a well known experiment, a good experiment that has been presented. So there is an excellent experiment that demonstrates the utility of the social proof principle in action। right। हम आपको एक ऐसा सोशल प्रूफ एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ सोशल प्रूफ कैन make a different change, right, in your business। so let's get started and let's move। so there is a social proof. There is a experiment that happened regarding the social proof. Is the 4 reasons why were given to 4 different group of guests for reusing the towel, right? 4 reasons दिए गए a different group of people, a 4 group of people को, जहाँ पे उनको एक गेस एक एक I would say example दिया गया है, एक scenario दिया गया to reuse because, right, they just to reuse their towel। the first was that reuse because of the environment। okay, एक कॉमन सा चीज है कि if you reuse this towel, that will save the environment, that will save the planet, a common example।
right? This is the first scenario, or the reason given to four group of people. And reuse because we will donate if you do, right? Just to मेंटेन की एक लोगों को साइकोलॉजी यूज की गई यहाँ पे कि इफ यू डू सो, इफ यू रीयूज द टॉवल वी विल डोनेट सम ऑफ इट टू अदर पीपल, राइट? एक इमोशनल टच दिया गया है यहाँ पे, राइट? द थर्ड वन इज रीयूज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डोनेटेड, ओके? सो यहाँ पे क्या होगा कि लोगों को लगे कि ओके, माई पार्ट इज ऑलरेडी डोनेटेड, इफ आई रीयूज बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है, दिस इज अगेन अ इमोशनल स्टेट, right? Reuse because almost everyone else reuse too. Okay. So what this particular thing happened over here is like कि लोगों को बिलीव होने लग गया, right? कि अगर मैं भी इसको रीयूज करता हूं, ओके, क्योंकि बहुत सारे अदर लोगों ने भी इसको यूज किया हुआ है, ओके? सो दिस इज अ रीजन कि everyone else is reusing it. And the last one is reuse because everyone else reuse too. So people brain work this way that if everyone did, I need to do this too. Okay. So इसी order को use करके this experiment happened, and the experimenter, the team showed up and they start seeing a lot of result that लोगों ने towel को reuse करना start किया जब उन्होंने कहा कि everyone else reuse too, right? जब लोग दूसरे लोगों को करते हुए देखते हैं, they tend to see that यहाँ पे मेरा effort कम होने वाला है and I need to make more quick decisions, right? So that's the reason people go for that. I need to see someone doing this, then I can do this too with a lot easy effort, right? They can know that okay, मुझे इसको reuse करना है, अदर लोग कर रहे हैं, every other person is using it, reusing it, I need to reuse too, ताकि मुझे और decision नहीं लेने पड़ेंगे that I need to go for saving the environment or I need to donate it to everyone else did, right? I need to do that too. Okay, so this is the experiment that happened, and a lot of people went for other decision rather than making their own decision. All right, so let's move ahead and let's see what we have again in front of. So okay, so creativity with social proof, operators are standing by. So this is something used in a past for in TV shows that operators are standing by. ओके, सो दैट मीन्स ना आप ऑपरेटर को देख सकते हो, ना आपको पता है कि स्टिल द ऑपरेटर्स आर स्टैंडिंग बाय, बट यू स्टिल वेट, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि स्टिल द ऑपरेटर्स आर बिहाइंड द स्क्रीन एंड दे आर स्टैंडिंग बाय टू गेट स्टार्टेड द शो, राइट? सो दिस इज अ क्रिएटिव लेवल, ओके? दैट अगर आप लोगों को बोलते हो कि ओके, योर वर्क इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन द बैक एंड, राइट? पीपल डजंट नो कि ये बैक एंड पे चल रहा है कि नहीं, बट विद दिस सोशल प्रूफ आपको लगता है कि ओके, माई वर्क इज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट? दे आर वर्किंग ऑन माई थिंग्स, ऑलराइट? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज क्रिएटिव विद द सोशल प्रूफ, ऑलराइट? So if your lines are busy, please call again. Everyone is calling in. I will wait too. Right? So यहाँ पे क्या होता है कि people mind hit in that particular way that कि बहुत लोग इनसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? if I would say कि आपको कस्टमर सर्विस चाहिए regarding any product, right? So that means if the lot of people are contacting the same service provider or the same company, then you will end up having the I would say the lines you can hear is that everyone is calling in, that your line is busy, please call again later, right? सो आपको यहाँ ऐसा प्रिटेंड होता है कि एवरी वन इज कॉलिंग एंड आई विल टू, अगर ये बहुत जरूरी है, अगर ये मुझे उसको चेंज करना है, दैट आई नीड टू कॉल देम अगेन अगेन एंड अगेन. सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड सोशल प्रूफ एंड बिल्ड मोर क्रेडिबिलिटी. आपको आपको अपने सोशल प्रूफ्स को उस तरीके से प्रेजेंट करना होगा दैट एवरी वन एल्स इज डूइंग, राइट? जैसे in our business that what we say is that in Mumbai or in Pune, we have a lot of companies that are using our services. We have this company, that company, we have multiple company names. So this is how the decision making gets easier, that people see that अगर ये पांच कंपनी ये 10 कंपनी के साथ ऑलरेडी काम कर रही है, इनके साथ ऑलरेडी बिजनेस ले रही है, ऑलरेडी साइड विजिट अपॉइंटमेंट पे जा रही है, देन आई नीड टू गेट इन टू देयर सर्विस एंड प्रोडक्ट एज वेल, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं. आई डोंट नीड टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन, मुझे बस ये डिसीजन लेना है, इधर आई कैन गो इन और आउट, राइट? सो ये डिसीजन मेकिंग का बहुत ईजी बना देता है,
Okay, so this is how you can use social proof into your firm business. Okay, now comes the second question, which is how you can build social proof. All right, so the strategy one. First thing that what you can do is that invite an influencer of your area to conduct a podcast on the topic of home design, home feel, home aesthetics, and importance of good home design. Right? आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर ढूंढने होंगे दैट इन योर एरिया दैट आर हैविंग इंटरेस्ट इन डेकोरेशंस, इंटीरियर, राइट, एक्सटीरियर्स। उनको पसंद है घर को डेकोरेट करना, बाइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे ऑन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स in your local area, right? Message 30 to 50 influencer in your area who you think suits the vibe of your brand, right? A few of them will likely respond, negotiate with them and arrange a deal of 30-minute podcast. So आप ऐसे influencers को ढूंढ सकते हो that have a good reach, right? और उनके पास आपके आपके जो वाइब है आपका, जस्ट जस्ट लाइक यू आर इनटू द इंटीरियर डिसीजंस, राइट? सो आप वैसे इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हो दैट कैन हैव इंटरेस्ट इन द इंटीरियर डेकोरेशंस, एक्सटीरियर डेकोरेशंस एंड दैट हैव द रीच टू द फॉलोइंग ऑडियंस एज वेल, राइट? उनके पास वैसे ऑडियंसेस है जिनको पसंद है कि इंटीरियर देखना या एक्सटीरियर देखना, होम डेकोरेशंस देखना, फर्नीचर्स देखना, राइट? So you can message them on different platforms and नेगोशिएट करके आप एक 30 मिनट पॉडकास्ट उनके साथ शेड्यूल कर सकते हो, विच कैन बी अ ऑनलाइन पॉडकास्ट और ऑफलाइन पॉडकास्ट। यू कैन ब्रिंग देम इन टू योर ऑफिस, ऑलराइट? और आपको अगर ऑनलाइन करना है, यू कैन हैव अ जूम कॉल वेयर यू कैन गो इन एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर देम, राइट? आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस कि आपको क्यों लगता है कि हमें इंटीरियर करवाना चाहिए, एंड हाउ यू कैन बिल्ड मोर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। सो इस तरीके से यू कैन यूज डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स टू गेट अ 30-minute पॉडकास्ट, एंड you can host a podcast either by inviting them on your office or via Zoom, right? As just I have discussed. So इन सारी चीजों को आप यूज करके ये नंबर वन स्ट्रैटेजी दैट यू कैन ब्रिंग इन मोर इन्फ्लुएंसर एंड गो फॉर अ पॉडकास्ट दैट कैन बिल्ड मोर credibility into your local area, right? The main goal here is to have the face of the popular influencer in your area to build social proof of your brand, right? हमारा मेन गोल है कि एक पॉपुलर फेस को ऑडियंस के सामने लाके देना, क्योंकि ऑडियंस उनको रोज देख रही है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर फेस गेट इन टच विथ योर ब्रांड, देन आपके ब्रांड का भी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, राइट? क्योंकि उस बंदे ने ऑलरेडी, द इन्फ्लुएंसर हैज ऑलरेडी did some credibility, build some credibility in front of their audience. Now they got merged with you, and now both of you are getting the same reach using that influencer, and you are building more trust as a company owner, right? Second strategy would be like your podcast interview. You can invite your existing customers who have used your service. You can bring them on 30-minute interview call and ask them the following questions. तो आप ये चीजें भी कर सकती हो दैट यू कैन ब्रिंग इन, और आप उनके प्रॉपर्टी पे जा सकते हो दैट यू कैन मेड अ वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, द प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन, एंड नाउ यू सेट विद द होम ओनर एंड यू हैव अ 30-minute interview call asking them different questions from basic to high level, that how was the experience. So here is the list of few questions that I'm going to mention over here that you can ask in front of the homeowner to get more detailed version of a podcast, right? The first question is, what doubt did you have before deciding to do interior design? And this is a really good question. The reason why this is a good question is that a lot of people have doubts, right? A lot of people have doubts while making a decision when they go for interior design, just because interior designing is not a small budget thing, right? It costs somewhere between 20 lakh, 30 lakh, once year. A lot of people have done big projects as well. So for them, you need to ask this particular questions, that what doubt that you have before deciding to go with us as an interior designing team, right? So that was the first question. The second question would be, how did you come across our brand, right? आपको उनसे पूछना होगा that how did you come to know about us? Is it from a referral? Is it from social media? Is it from a YouTube video? Is it from an Instagram reel? How did you, if you did the Google search, how did you find us? Okay, ताकि आपको पता चले कि if you keep on doing this particular thing, right? If you keep on doing this particular thing, you will end up getting know that
the second thing I'm talking about कि how did you come to know across us our brand. तो आपको पता चलेगा कि that what is the majority of people are on the platform, right? आपको पता चलेगा आपकी एक्टिव ऑडियंस कहाँ पे है. ओके. अगर आपने 10 पॉडकास्ट किए, अगर 10 इंटरव्यूज लिए होम ओनर्स के साथ, एंड यू केम टू नो कि अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग इंटरेक्शन विथ यू ऑन द वेबसाइट, राइट? सो अगर मेजोरिटी ऑफ लोग, जैसे 7 to 8 बंदों ने, अगर होम ओनर्स ने अगर ये डिसाइड किया कि दैट दे इंटरेक्टेड विथ यू ओवर द वेबसाइट, दैट यू नीड टू वर्क ऑन द you need to work on the website thing, right? आपको एसईओ पे काम करना होगा. योर टारगेट ऑडियंस इज ओवर देयर. ओके. लोग आपको गूगल के थ्रू सर्च कर रहे हैं. ऑलराइट. अगर आपको लगता है कि a lot of people find you through the Instagram reels, right? Then you need to focus on the Instagram part of the thing, the social media branding. ओके. सो ये सारी चीजों को आपको पता करके एक डेटा प्लान करना होगा, जहां पे आपको पता चले कि हाउ आई कैन यूटिलाइज माई सोशल प्रूफ इन डिफरेंट मैनर्स, राइट? सो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती है. वी डू आस्क दैट हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट अस. कोई बोलता है कि वी आर फ्रॉम इंस्टाग्राम, वी कम टू नो अबाउट यू गाइज फ्रॉम इंस्टाग्राम, सम ऑफ देम आर फ्रॉम यूट्यूब. सो ये इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, सो वी नीड टू बी प्रेजेंट ऑन एवरीवेयर. ओके. The third thing would be how was your initial interaction with us? Okay, ask them the crucial questions. Key how we get in touch with you, how you came to know across our brand. So this is a few questions that you can ask and that you can be great presented in front of the homeowners. And let's move to the another page that what objection did you get you when you get in touch with us when you first met with us, and how did our team help resolve them? So this is a great question to ask, that a lot of homeowners do have objections, right? उनको पता नहीं होता कि रेट्स क्या होने वाले हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं फॉर इंटीरियर, आर दे एनी गुड और नॉट, राइट? और ये सारी चीजें जब होती है तब लोगों को डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और इसी टाइम जब कंपनीज उनको रिजॉल्व करती है, दैट हेल्प देम द होम ओनर टू मेक द डिसीजन अ लॉट क्विकर. ओके. तो यहाँ पे आपको उनको पूछना है दैट हाउ अवर टीम रिजॉल्व देम. आपको किस किस पॉइंट में हमारी टीम ने हेल्प किया है, आपको कैसा हमने फ्रॉम हैविंग ऑब्जेक्शन टू डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसेस तक हम आपको लेके गए. सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क. द फिफ्थ क्वेश्चन वुड बी हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद अस, राइट? सी बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है, बट अगर आप वो होम ओनर्स अगर आपका अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, देन वहां पे क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस 9 out of 10 था. ओके, 8 out of 10 था. सो दिस इज गिविंग यू अ रेटिंग, राइट? अ वर्बल रेटिंग इसको आप बोल सकते हो. यहाँ पे कोई फिजिकल कोई विजुअल रेटिंग नहीं है, द 5 स्टार 10 स्टार, बट यहाँ पे एक वर्बल रेटिंग है दैट इट वॉज 10 out of 10, राइट? अगर आप पूछते हैं कि हाउ वाज एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद अस, एंड द होम ओनर सेज दिस इज अ 10 out of 10 और 10 out of 100. ओके. So, sorry, the 100 out of 10. So this is how you can bring in more verbal commitments from the homeowners. Okay. So sixth number, what specific aspect of your service stood out to you, right? तो वहां पे वो चीजें बताएंगे कि योर दिस डिटेल वाज रियली गुड, राइट? योर कोऑर्डिनेशन वाज रियली गुड. So the sixth question is that what specific aspect of our service stood out to you? So यहाँ पे बहुत लोग बिलीव करते हैं कि उनको बहुत स्मॉल डिटेल्स उनको होमओनर्स को बहुत पसंद आई है, जस्ट लाइक कि आपने उनको फर्स्ट डे पे कुछ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भेजा, राइट? द सेकंड डे वाज कि आप उनके साथ बैठ के एक पूरा सिनेरियो प्लान कर रहे हो, और बाई वीकली आप उनके साथ मीटिंग करके उनका जो परफेक्ट स्ट्रैटेजीज है उन्होंने जो डिसाइड किया था, उनके साथ मिलके आप उनके प्रोजेक्ट पे उनको डिस्क्राइब कर रहे हो कि हमने ये चीज़ यहाँ पे यूज़ की है, बहुत स्मॉल डिटेल्स हमने यहाँ पे की है, कुछ हैंडवर्क किया है हमने. तो वो ओवरऑल एस्पेक्ट वो आपके साथ शेयर करेंगे अगर आप इस चीज़ को थ्रू आउट द प्रोसेस यूज़ करते हो, राइट? The last question is that how did you design solution meets your needs and experiences? Okay, so बेसिकली आप उनको पूछ सकते हो कि आपने जो आपके थॉट प्रोसेस पे था, जो आपने डिजाइन आपने सोच के रखे थे.
So the seventh question is that how did your design meet your needs and expectations, right? सो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने जो डिजाइन डिसाइड किया था, राइट, वो डिजाइन आपको ऑन पेपर एंड एज वेल एज ऑन रियलिटी मिला है कि नहीं, राइट? जस्ट बिकॉज जब आप उनका डिजाइन लेते हो देन यू गो फॉर रेंडर्स, यू गो फॉर ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, फिर देन यू गो फॉर द प्रोजेक्ट एंड द एग्जीक्यूशन. सो फ्रॉम गेटिंग the deal done to getting their drawings done to getting their renders done to getting them to the execution part, right? आपको वो पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ कैप्चर करना है, दैट हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आपने जो जो सोचा था, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, आई डिड यू गेट दैट राइट पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट? ओके, सो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क. एंड अगेन the eighth question is that were there any challenges during the process and how were they addressed, right? जैसे बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स आती है कि मुझे स्पेस में ये सारी चीजें चाहिए बट अदर इंटीरियर्स डिसाइडेड नॉट टू डू जस्ट बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था. एंड वी हाउ वी एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. The eighth question is, were there any challenges during the process and how were they addressed? So बहुत टाइम ऐसे लोगों को होता है कि a lot of company said कि मुझे इस एरिया में पूजा यूनिट करवाना है या कुछ करवाना है, बट अदर कंपनी सेड कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस वी कैन नॉट डू. बट उस चैलेंजेस को कैसे आपने एड्रेस किया, कैसे उसी एरिया में विद दैट सेम स्पेस आपने उन इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया, राइट? ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जो दैट कैन बी गेट द प्रोस्पेक्ट इन, मतलब आपकी कंपनी है ना, आपके प्रोस्पेक्ट को एक हायर अथॉरिटी पे बिल्ड करके देगी, राइट? एक हायर अथॉरिटी पे सेट करके देगी. Okay, so this is what you need to ask. The ninth question would be, how do you feel about the final result of the design project, right? उनका एक overall experience लो आप, right? कि final project from start to finish आपका कैसा लगा, मतलब जब final project बन के ready हुआ, that what was the expectations and how we delivered on the expectations. Okay, so that's another thing. And the 10th question would be, would you recommend our service to others? If so, why? Right? आप हमेशा रिकमेंडेशन के लिए पूछो दैट इफ यू वांट टू रेफर टू अस टू समवन और इफ यू वांट टू रिकमेंड अस टू समवन, then would you do so, and if so then why, right? What did you like about our service that you would like to recommend us to other homeowners as well? ओके, सो उनका जो आंसर्स होगा दैट वुड बी समवेयर लाइक कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपके कस्टमर एक्विजिशन बहुत अच्छी है, दैट लेट्स सपोर्ट व्हाट वी से, एंड आपके जो मटेरियल आपने यूज किया दैट इज रियली ग्रेट. सो दिस इज हाउ you can get the proper interview setup in front of the homeowner. Those questions आपके लिए enough है. If you have more questions you can go for it, right? But मुझे लगता है ये 10 major questions है that you can ask to a homeowner in order to get more detailed interview of the project that you have delivered. और मैं ये believe करता हूँ कि that you need to do this with every single prospect that you have, right? So these questions will help you provide a comprehensive view of the customers and journey and experience with your brand and will increase the social proof. So ये सारी चीजें मिलाकर that you will come to know that मैंने कहाँ पे गलती की है in terms of getting the service, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल भी होता है कि बहुत टाइम लोग बोलते हैं कि आई वांटेड हेल्प इन दिस पर्टिकुलर एरिया बट मुझे वहाँ ये हेल्प नहीं मिला, बट आई एम ओके विथ इट, राइट? आई डोंट थिंक कि ये मुझे बहुत प्रॉब्लम करने वाला, बट आई एम ओके विथ इट. एंड आई बिलीव कि ये जो भी चल रहा है, ये जो भी हो रहा है, दैट इट हैज अ ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस. आपने मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर कर दिया एंड आई एम रियली हैप्पी विद द इंटीरियर दैट आई हैव गेटिंग फ्रॉम यू, राइट? So this is a social proof that you can get from the customer experience. Okay. So the action step for strategy one. Once you have recorded the podcast interview with the influencer, post that video on YouTube, Instagram, Facebook, website, everywhere, right? You can also cut the video into multiple small clips and you should utilize it as a short form content and upload it as a reel. ओके, जब आपने इन्फ्लुएंस के साथ मीटिंग कर ली है, आपका वो इंटरव्यू हो चुका है, आपका इंटरव्यू सेशन एंड हो चुका है, देन यू कैन यूज द फुल वीडियो ऑन यूट्यूब and again the full video on Instagram and full video on Facebook, website, everywhere, right? आपने उनके लिए पैसे दिए हैं, then you need to utilize it on each and every platform. Now, you can cut the videos into multiple small clips. आप उनको छोटे छोटे shorts and reel वाले clips में convert कर सकते हो, and you can use into multiple content, right? आप throughout the week content post कर सकते हो वो particular video से, throughout the month कर सकते हो. So you need to plan it according to it, according to the video clip that you have. Okay, the point is that you have
पेड द इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर गेटिंग द पॉस्ट कार्ड डन, देन यू नीड टू शुड एम फॉर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो द पॉइंट इज दैट इफ यू हैव पेड द इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि उस इन्फ्लुएंसर से अगर आपने पॉडकास्ट लिया है या इंटरव्यू लिया है, देन यू हैव पेड फॉर इट एंड यू हैव टू गो फॉर द ROI. ठीक है, आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकालना है. अगर आपको उससे उस रील को यूज करके मोर ऑर्गेनिक रीच लानी है, राइट, you can use that social proof in order to get more deals out of it. So make this video visible to your customers everywhere. Okay, आपको ये सारे platforms पे use करना है. Alright, and let's move to the next point, which is the extent step for strategy 2. Right, once you have recorded an interview videos with your customer, upload all the videos to YouTube channel and make it a playlist of these video. Okay, so here you can see example that interview every with CEO, just like just an example है, but आप यहाँ पे होम ओनर का लोकेशन, राइट, ये सारी चीजें मेंशन करके एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं यूट्यूब पे, विच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. वट एवर आई एम सेइंग इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट द स्ट्रैटेजीज, बट द इन्फ्लुएंसर वन इज लाइक आप उसको पे करना पड़ेगा, बट ऑल द स्ट्रैटेजीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. आप एक प्लेलिस्ट बना लो यूट्यूब पे, दैट विल, अब वहां पे वो प्लेलिस्ट एवरग्रीन होने वाला है. फर्स्ट थिंग इज की वहां पे जो ऑर्गेनिक लोग आएंगे, राइट, फ्रॉम यूट्यूब सर्चेस, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं. इस प्लेलिस्ट को आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो, एंड आई एम गोना वॉक यू थ्रू दैट एज वेल. So that topic is how you can utilize social proof, right? The biggest question. Once lead come in and book an appointment with you, you can send them these podcasts and interview videos so they can learn more about your before you visit their site, right? This way you can also building. So once a lead come in and book an appointment with you, you can send them these podcasts and interviews videos so they can learn more about your about you before you visit their site, right? This way you can also build the authority of your business and yourself before meeting with the customer. When you meet them, they will take you more seriously because you have already presented yourself as an authority, right? So let me explain this. वंस द लीड बुक एन अपॉइंटमेंट, जब भी कोई लीड आपके साथ एक अपॉइंटमेंट, फोन कॉल अपॉइंटमेंट और एक साइट विजिट बुक करती है, ट्राई करो आप कि वट एवर यू हैव कलेक्टेड एज अ सोशल प्रूफ थ्रू आउट द जर्नी, राइट, इधर फ्रॉम द होम ओनर साइड और फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर, try to use them as a फ्रंट एंड अथॉरिटी बिल्डिंग सोशल प्रूफ, राइट. जहां पे आप उनको मिलने से पहले इतना सोशल प्रूफ दिखा दो, इतना अपने वर्क के बारे में उनको बता दो, ताकि व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, एंड हाउ योर एक्सपीरियंस विद द होम ओनर्स थ्रू आउट द जर्नी, राइट, ताकि वो आपको मिलने से पहले एक हायर अथॉरिटी पे प्लेस करे. ओके, और आपको समझ में आ जाए, उनको ऑलरेडी समझ में आ जाए कि ये बंदे, ये टीम क्या काम करती है, हाउ दे ऑपरेट एंड व्हाट देयर वर्क्स आर. Okay, so this is how you can use social proof in authority and build more credibility in front of the homeowners that you want to be presented in front of. All right, let's move to the next point, which is like you can also show these videos during consultation with customers. The perfect time to use them is when a customer raise objections. Okay, so ये कंसल्टेशन के दौरान भी आप भेज सकते हो, बट द बेस्ट तरीका है कि जब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं कि मुझे नहीं पता आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, देन यू हैव अ शॉर्ट क्लिप दैट यू सेंड इट टू देम. ओके, कि इस होमओनर के साथ हमने काम किया एंड दिस इज हाउ अवर एक्सपीरियंस लुक लाइक. ओके, मुझे नहीं पता है कि आप स्मॉल स्पेस में कैसे इंटीरियर करके दे पाओगे. देन यू हैव अनदर वीडियो ऑफ अ होम ओनर जहां पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आपने स्मॉल लोकेशन पे, स्मॉल स्पेस पे कैसे उनका इंटीरियर करके दिया, राइट. So after the consultation, client often take time to make a decision. You can send them the podcast and interview video playlist to help them decide faster. As discussed in the beginning, when people are uncertain about making a decision, they don't look inside, they look outside. So जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पीपल ऑलवेज रिलाई ऑन अदर पीपल टू मेक द डिसीजन. जब कंसल्टेशन में लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं आपका कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, राइट, पहले तो अर्जेंसी आप क्रिएट करो और फिर उन अर्जेंसी के साथ आप एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे वो लोग इंगेज रहे आपके वीडियोस को लेकर और आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा हेल्प मिले, राइट, एंड दे कैन डिसाइड फास्टर, ताकि वो दूसरे लोगों को ऑलरेडी देख रहे हैं कि दे हैव मेड दिस डिसीजन विद दिस पर्टिकुलर इंडिया फर्म, और उनको भी वो चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी, राइट.
The last point is that you can also utilize these videos as a follow up with your prospect. अब अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अगर आपका वो फोन नहीं उठा रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, साइट विजिट हो चुकी है, देन यू कैन पुट दिस वीडियो एज अ फॉलो अप सीक्वेंस, जहां पे आप उनके साथ इन वीडियोस के थ्रू फॉलो अप कर रहे हो. ओके, so the pro tip, all right. So the pro tip is like key after you have provided excellent service to the customers, send them this interview video playlist and tell them, Mr. Manish, when you refer your friend or relative to us, you can share this playlist along with the contact number so they can learn more about us. All right. So यहाँ पे क्या होगा कि अगर जब आप किसी को बहुत अच्छी सर्विस दे दे तो आपने उनका इंटरव्यू भी ले लिया, सारी चीजें डन हो चुकी है, एंड नाउ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तब आप उनको ये चीज बोल सकते हो कि दैट इफ यू वांट टू रेफर अस टू योर फ्रेंड एंड फैमिली, राइट, ये प्लेलिस्ट उनके साथ पहले ही आप शेयर कर देना ताकि वो हमारे बारे बेटर जान पाए, हमारे एक्सपीरियंस के बारे जान पाए, और जब हम उनसे बात करें तो उनको ऑलरेडी पता हो कि व्हाट एक्चुअली वी डू एंड हाउ वी डू इट, राइट. सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज, और आपका ये बहुत टाइम सेव करेगा ताकि आपको कॉल पे उनको बताना नहीं पड़ेगा दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज हाउ वी डू, ये हमारा प्रोसेस है, हम ऐसे काम करते हैं. बट ये चीज आपके कस्टमर्स आपके लिए खुद ब खुद करके देंगे व्हेन दे विल बी रेफरिंग यू टू समवन एल्स, राइट. आपका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बिल्ड है, इसको आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम यूज कर सकते हो जब आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस पे है. ऑलराइट. And once your customer, friend and family start watching these videos, first thing what will happen, your videos will get more views which will help build social proof, right. आपके videos पे views आएंगे, आपके views के reason से आपके videos viral होंगे, and which will help build more social proof as well, right. और लोगों तक आपकी वीडियोस पहुंचेगी, वो देखेंगे आपको, एंड दे विल बिकम मोर ऑर्गेनिक लीड टू यू. द सेकंड पॉइंट वुड बी दे विल come to see you as an authority, increasing the chances of them contacting you and converting to customers. By planting a seed in their mind from the beginning, you enhance the likelihood of conversions. ओके. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट यू आर ऑलरेडी प्लांटिंग अ शीड, दैट मीन्स उनके माइंड पे आप ऑलरेडी एक ऐसा थॉट प्रोसेस डाल रहे हो जहां पे उनको ऑलरेडी पता है कि व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर इंटीरियर कंपनी. ऑलराइट. एंड आपके प्लेलिस्ट ऑलरेडी बिल्ड है, दैट्स व्हाट वी कॉल द एवरग्रीन प्लेलिस्ट, जहां पे आप सिर्फ भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, एंड पीपल विल टेंड टू हैव बिलीव इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट, क्योंकि वो रियल ह्यूमनस है एंड रियल ह्यूमंस है, right? No AI, nothing like that. So, in the next training video, all right, next training video, before going to the next training video, this is it for the social proof thing. And I hope I made you understand the entire step-by-step process, how you can build in social proof, how you can utilize social proof, and what is actually social proof that can help your interior firm. All right. So in the next training video, we will learn about how you can implement the reciprocity psychology into your sales, right? And with the help of image, if you can understand that what reciprocity means, then that's good. If not, I'm here to explain that was what is reciprocity and how you can use that particular psychology into your sales in order to get more deals out of it, right? So this is it from my side, and I hope that you guys enjoy this video, and see you in the next sales training. Till then, have a great time from the Interior Growth Partners family. Till then, have a good one. Bye bye.